from alkyne. So listen how to prepare it from alkyne. How to prepare it from alkyne. देखो आपको पता है अल्काइन मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यह है एक अल्काइन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब हम उसको गर्म करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्या में हीट करेंगे अल्काइन को, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 1773 केल्विन। रेड हॉट पता है ना आपको, जैसे भी हम आयरन को गर्म करते हैं वो क्या हो जाता है, लाल। जल्दी लाल नहीं होता, तो जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, लाल। बराबर। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, कौन सी ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब। सो इट इज द रेड हॉट आयरन ट्यूब। और वो लाल हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब 1773 केल्विन पे, कितने टेम्परेचर पे, 1773 केल्विन पे जब हम उसको क्या करते हैं, गरम। रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब हम उसको गरम करते हैं तो क्या होता है, दिस इज अल्काइन, दिस इज अल्काइन एंड दिस इज अल्काइन। ये जो सारे अल्काइन हैं इनके क्या टूटते हैं, बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये जो सारे अल्काइन हैं इनके क्या टूटते हैं, बॉन्ड। कौन से बॉन्ड टूटते हैं, पाई बॉन्ड। और जब इनके पाई बॉन्ड टूटते हैं तो इट अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। इट अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन, सबका होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। और होमोलिटिक फ्यूजन होने के बाद इधर है एक अनपेड, इधर है एक अनपेड। इसका होमोलिटिक होने के बाद इधर है एक अनपेड, इधर है एक अनपेड। और इसका होमोलिटिक होने के बाद इधर है एक अनपेड, इधर है एक अनपेड। सारे जगह क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। बराबर। सबका होमोलिटिक फ्यूजन होने के बाद इनके पास क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये समझ गए ना, ऑल विल अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन एंड देयर विल बी अ ब्रेकिंग ऑफ इट्स पाई बॉन्ड एंड ऑल द पाई बॉन्ड विल ब्रेक होमोलिटिकली। ऑल द पाई बॉन्ड विल ब्रेक होमोलिटिकली। समझ गए, सारे पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, होमोलिटिकली। एंड एज द ऑल पाई बॉन्ड्स विल ब्रेक होमोलिटिकली, तो व्हाट हैपेंड, सो सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हुए होमोलिटिकली। अब ये क्या करेंगे, अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। बराबर, करो शेयर। ये अपना एक एक अनपेड इधर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना एक अनपेड इधर शेयर कर रहे हैं, ये अनपेड इधर शेयर। एंड यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ बेंजीन रिंग। This is ethyne. And you get the benzene. This is the first method of preparation from alkyne. From alkyne. By heating it at red hot tube, red hot iron tube, and it forms the alkyne.
Okay. So listen, this is the benzene. Now the second method of preparation. From phenol. From phenol by action of zinc dust. From phenol by action of zinc dust. From phenol by action of जिंक डस्ट। तो हम फिनॉल से इसको बनाएंगे जिंक डस्ट की एक्शन करके। फ्रॉम फिनॉल बाय एक्शन ऑफ व्हिच डस्ट? जिंक डस्ट। So listen, we have the phenol. This is the benzene ring and it is attached to OH. And when benzene ring is attached to OH, the compound is called phenol. And when it is and heat, ठीक है? जिंक डस्ट एंड हीट। तो अभी ऐसा है, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, 2A82 बराबर 2A82 2A82 दिस इज द जिंक। क्लियर? अभी इसके बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बराबर। और अगर इसके बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जो जिंक है इसकी टेंडेंसी है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन देने की? 2 विद द रिमूव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है देयर इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इट अंडरगो व्हिच फिशन? होमो की हेटेरो, बिकॉज़ इनकमिंग आयंस मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिशन and there is the breaking of bond between oxygen and hydrogen। बराबर। अब ये बॉन्ड अगर टूटा तो इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे इधर हाइड्रोजन के ऊपर। ये बॉन्ड टूटा तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर इधर कार्बन के ऊपर। बराबर। और ऐसे जाने के बाद फिर ये Zn डाई पॉजिटिव है, इट विल कंबाइन विद O डाई नेगेटिव एंड इट विल कंबाइन टू फॉर्म ZnO प्लस these 2 electron, it accept 1 electron and get converted into H free radical. This is carbon positive, it accept 1 electron and after accepting 1 electron, this is the benzene ring और इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसको लग गया हाइड्रोजन। So this is the benzene। दो इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया और हमें यहाँ पे मिल गया बेंजीन प्लस ZnO। चाले छो? This is the second method of preparation। Now write down the third। होगी सेकंड हो गई, समझ गए सबको? और द थर्ड मेथड समझे था ना? नेक्स्ट हमने सोडा लाइन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? NaOH हीट पढ़ा था। अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो और उसमें एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो,
देखिए अल्किन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें एक मेथड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है क्या? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड वो ओ एन ए, फिर उसमें NaOH हीट डाला, फिर उसने CO2 निकाल दिया और H लगाया, NaOH हीट लिखो भी। From sodium benzoate नाही आहे ना कोणाकडे, एक ऐड करून द्या त्याच्यात, ना ये ऐड करून द्या त्याच्यात, ठीक है? देखो इधर पहले मैं अल्केन की पढ़ा था, फिर हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है? दोनों की सेम है, कुछ फर्क नहीं है। देखो इधर, you all know very well about the carboxylic acid. Do you know carboxylic acid? What is carboxylic acid? सांगा सांगा थोडंसं काय? RC डबल बॉन्ड OH, कोणचा ऍसिड? कार्बोक्सिलिक ऍसिड. And when we treat this carboxylic acid with NaOH, वो नहीं है base. Acid react with base to form salt and water. Once more, acid react with base to form salt and water. Acid has a tendency to donate H positive ion and base has a tendency to donate OH negative ion. तो एसिड जब टूटेगा क्या बनाएगा जल्दी? आर सी डबल बॉन्ड ओ निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और NaOH जब टूटेगा तो वो क्या बनाएगा जल्दी? Na पॉजिटिव OH निगेटिव. And we have the concept positive negative attraction. H positive combined with OH negative and Na positive combined with O negative. प्रोडक्ट कैसा बनेगा जल्दी? R C डबल बॉन्ड O Na. R C डबल बॉन्ड O Na. This is sodium carboxylate. Sodium carboxylate. Sodium carboxylate. This is the sodium carboxylate, and as it is the sodium carboxylate, we have this is RC double bond OONA, sodium salt of carboxylic acid. And when we treat this sodium salt of carboxylic acid, ठीक है, इसको जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? NaOH CaO हीट, NaOH CaO हीट, इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? इधर ध्यान देंगे, जैसे एक्चुअल में हम NaOH को ऐसे तोड़ते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, but if I break this OH bond, so this oxygen will carry negative and hydrogen will carry positive, and this oxygen carry which charge? Negative charge, and hydrogen carry positive charge. Now this O negative is electron, O negative is electron rich, और हमें पता है ये जो कार्बन है HC डबल बॉन्ड O, this carbon is called which carbon? कार्बोनिल कार्बन. कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, ध्यान रखेंगे. This carbon is a which carbon? Carbonyl carbon. Is it? This carbon is a carbonyl carbon, and this is O negative and this is H positive. O negative is electron rich. Attack at
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। This O negative attack on which carbon? Carbonyl carbon. As soon as it attack on carbonyl carbon, electron of this bond get shifted on carbon. अब इसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो यार ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाने चाहिए या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसने अटैक करने के बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो कुछ नया होगा क्या? आया कौन? ONA। गया कौन? ONA। बराबर, तो कुछ होगा। लेकिन प्रैक्टिकली रिएक्शन करने के बाद कुछ नया है वहां, ठीक है। और अगर कुछ नया है वहां तो क्या होना चाहिए? ONA जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर वो गया तो क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ या पहले था। कुछ नया होगा क्या? लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नया है वहां, और इसीलिए यहाँ पे वो इन्हें अटैक करेगा, वहां से R निगेटिव निकलेगा, और R निगेटिव निकलने के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ONA, और यहाँ पे भी ONA, और R negative combined with H positive combined to form RH. That RH stands for alkane, and this is what? Na2CO3. It is sodium carbonate. क्लियर है? ज्यादा का कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। RC डबल बॉन्ड ONA उसके ऊपर अटैक करेगा, वो बनाएगा Na2CO3 प्लस RH। दैट इज द कार्बोनिल कार्बन, एंड दिस इज NaO निगेटिव। अटैक करेगा, अटैक करने के बाद Na2CO3 मिलेगा और RH मिलेगा, ठीक है। This is RC double bond ONA, NaOH CaO heat, Na2CO3 plus RH। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम। अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिख लेना इसको एक एडिशनल, ठीक है। तो सोडा लाइम, क्या रोल है सोडा लाइम का बताओ? क्या निकाला उसने वहां से? CO2 और Na वो जो कुछ भी ले सकता उधर, लेकिन मेनली वहां से क्या निकाला? CO2, और वो उसकी जगह क्या लगा दिया? H। और इसीलिए मार्जिन के ऊपर कॉन्सेप्ट लिखेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम NaOH CaO हीट, सोडा लाइम NaOH CaO हीट। वंस मोर सोडा लाइम NaOH CaO हीट। वंस मोर सोडा लाइम NaOH CaO हीट। क्या करता है? CO2 निकालता है, H लगाता है, ठीक है। देखो मार्जिन पे लिखेंगे सोडा लाइम NaOH CaO हीट, NaOH CaO हीट, CO2 निकालता है, H लगाता है।
NaOH हीट, क्या कॉन्सेप्ट बोलो? सोडा लाइन क्या करता है? Na, चांगलं सांगा, NaOH हीट क्या करता है? CO2 निकालता है, H लगाता है, बराबर? वंस मोर का सोडा लाइन, NaOH हीट क्या करता है? CO2 निकालता है, H लगाता है, ठीक है? ग्रेट कॉन्सेप्ट करो, कल 5 बार लिख के लाना। NaOH हीट कौन है? वो सोडा लाइन क्या करता है? CO2 निकालता है, H लगाता है। नेक्स्ट, दिस इज द सोडा लाइन, NaOH हीट, CO2 निकालता है, H लगाता है। अभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेंजीन में। अब अपने उसी में लिखा है कि ये कुछ एडिंग दिया, ते अल्केन मध्ये लिहिलं, आता हे कुठं लिहा ना आता बेंझिन मध्ये, ठीक आहे? थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंझिन मध्ये। आता ग्रेट कॉन्सेप्ट करत त्याला, ठीक आहे? आणि ते डबल बॉन्ड की देत चला आतमध्ये बेंझिन रिंगच्या, ते सायक्लो हेक्सेन होते, दिले वाटते तिथे, दिले का? हा, ठीक आहे, सायक्लो हेक्सेन होते ते दिया। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, from sodium benzoate, from sodium benzoate. What is sodium benzoate? From sodium benzoate, you know very well, this is a which ring? Benzene ring, and here double bond ONA, sodium benzoate, is it? बेंजोइक एसिड पता है आपको? बेंजीन रिंग को जब क्या लगता है? COOH, तो we say it is a which acid? बेंजोइक एसिड। Once more, बेंजीन रिंग को जब क्या लगता है? COOH, तो it is called benzoic acid. Acid has a tendency to donate H positive ion. तो एसिड ने H positive ion देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कौन सा आयन? बेंजोइक आयन। And it is called which benzoate? सोडियम बेंजोएट। कौन सा बेंजोएट? सोडियम बेंजोएट। This is sodium benzoate, and when we treat it with NaOH, NaOH कौन है ये बोलो? तुम्ही इंग्रजी देतो, तुम्ही वाचा। नहीं, वाचा बरं इंग्रजी आहे तो। वेल डन, क्लॅप फॉर यू। ठीक है, इंग्रजी वाचता है तुम्हारे, है ना? ठीक है, चलो बच्चों, क्या है ये? असं म्हणा अजून आरामशीर, तुम्हाला ऐकून गेलो। अच्छा, क्या है ये? क्या करता है? वंस मोर, क्या है सोडा लाइन? What is soda lime? चांगलं, शुद्धि क्या करता है? क्या है सोडा लाइम? क्या है सोडा लाइम? क्या करता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडा लाइन, NaOH हीट क्या करता है? जेवण क्या? सगळ्यांची आवडीची गोष्ट आहे ना? जेवण
आजकाल थे पण नाही ताट कुठे आवडतच नाही जेवण वारंवार जेवायला चिप्सचे पुढे खाणं आवडीची गोष्ट आहे ना मोमोज मंचुरियन नूडल्स शंकरपाळे शंकरपाळे जमाना नाही हाँ झालं 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 जेवण लक्ष द्या तो क्या निकाला इसमें से CO2 और क्या लगाया है H अब ये है बेंजीन क्या है प्लस देखो क्या हुआ यहाँ का NaO और यहाँ का H H किसको लगा बेंजीन और वो C डबल बॉन्ड O Na ऐसा के अच्छा और इसको इधर से लगा ONA और ये बन गया Na2CO3 व्हाट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बेंजीन लिखो जल्दी जल्दी झालं का छापा लवकर लवकर मिल गया कोई बोले बेंजीन मिल गया हे कसं आठवतं बरोबर इसमें आठवत फक्त कालची रिएक्शन या लवकर चालू नेक्स्ट ठीक है का ठीक है give the next study benzene reacts with Na2CO3 sodium carbonate that is sodium benzoate plus NaOH CaO heat soda you get the benzene have you written चालायचं आवडलं